In this fast running world, we think that we know everything and we know it to the fullest. But there are a few things that we don't. For you, the world might seem to be a small place, but even in this small place, many big things happen to people, children, and kids. We are here to reveal one such big thing. And that's ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Come, let's go into the world of ADHD. Hi there, I'm Dr. Fabian Almeida, psychiatrist and counselor. You will agree with me that our children are our future. And in our difficult times today, it is difficult to bring up children well. If our children have problems, then it becomes even more difficult. Have you heard of ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Come, let me tell you more about this problem. So, how common is ADHD? It's said that 10 to 20% of our population has ADHD, and it is more common in boys than in girls. Come to think of it, the boys are always caught, and that really brings them more to notice. But the awareness has increased, and therefore, it is being more recognized than before. Some kids may have problems only with attention or concentration. Some others may have problems with impulsivity and hyperactivity. And when it's combined, both problems with hyperactivity as well as inattention, then it's really difficult, the combined type. Remember that over half of the kids with ADHD have more chances of having some other psychological problem associated. That makes things more complicated, doesn't it? Our next destination is Sacred Heart School, India's first eco-friendly school. We are here to meet Master Dishant Ketani, who is a hyperactive child affected by ADHD. Here is the administrator of the school speaking more about Dishant. After that class, just to examine how the children were conducting their prayers. And while student was sitting on the first bench, as the administrator was there in the class, the headmistress was there with me, and even the class teacher was in the class of 32 children. And we expect absolute discipline or decorum while saying the national anthem. But this child, in spite of all three of us being present there, after the first two lines of the national anthem got distracted and started looking here and there. That is when I understood that this child must be suffering from ADHD, and I realized how important it is to take school mental health and consider school mental health as a very important aspect of education to help the children grow up. Kids with ADHD would have problems with attention and or hyperactivity and impulsivity. When it comes to attention, they have difficulty focusing at a single task. They get easily distracted. They make mistakes, silly mistakes, in both classwork, homework. They often fail to follow instructions given for a particular task. They have difficulty organizing themselves for tasks and activities. Very often they lose things almost daily, be it pencils, erasers, toys, whatever. And they are forgetful in their daily activities too. Impulsivity shows in their behavior as in being difficult for them to wait their turn. They were country and their capitals. What is the capital of then? Dishant, I didn't complete my question, dear. They often blurt out answers before the question is even completed.
When it comes to hyperactivity, they are very fidgety. They squirm in their seat. In the classroom, a typical ADHD child who's hyperactive would be moving up and around, running excessively, or even climbing around without reason. They have difficulty in playing or engaging in a task which is meant to be quiet, say meditation or calm, relaxful exercises. They are often on the go, as if driven by a motor. इनका बेटा दिशांत बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट बच्चा है, लेकिन साथ साथ में बहुत ही शरारती। लेट अस नो मोर अबाउट दिशांत। दिशांत का कब से आपने देखा कि कुछ ज़्यादा ही शरारती है? जब वो 1 साल का था तो वो बहुत शरारती करने लगा, इतनी शरारती कि हम उसे संभाल नहीं पाते। थक जाते हैं थक आप? जाते थे हम लोग, लेकिन वो नहीं थकता वो था। नहीं थकता था। एंड उसका ये नेचर था कि वो जो बोलता था, नेगेटिवली जो बोलता था वो करके दिखाता था। पॉजिटिवली तो उन बातों पे ध्यान नहीं देता था कि मैंने ये प्रॉमिस किया है तो पूरा करूं, लेकिन नेगेटिवली मैं ये करके रहूँगा, ये फाड़ के रहूँगा, तो ये करके फेंकूँगा, ये तोड़ूंगा, तो वो करता। कितनी ओकेजन्स पे वो अपना गुस्सा इस तरह से प्रकट करता है? मजबूर होके आप डैडी होने के नाते डिसिप्लिन के वास्ते कभी मारना वारना भी पड़ता था? कभी मारना भी पड़ता था उसको। वो क्या लास्ट स्टेज था? वो उसको मारना मेरी लास्ट स्टेज था। एक माँ को अपने बच्चे को मारना आसान नहीं है। जी आप पे नहीं, क्या बिल्कुल बीतती नहीं। थी? मुझे बहुत बुरा लगता था, जबकि अभी भी इस वक्त भी मैं जब भी दिशांत को मारती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और मारती इतना हद तक हूँ क्योंकि मेरा वो पेशेंस ख़त्म हो जाता है तभी मैं मारती हूँ। और उसे मारने के बाद एक वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे उसका रोना देखकर, या वो जिस वे में मुझे कन्विंस करता है कि सॉरी मम्मा प्लीज़ डोंट बीट मी, फिर आपके फिर मैं हाथों अपने पे हाथों पे बहुत, मैं अपने हाथों को तोड़ती भी हूँ और खुद अपने हाथों को बहुत ज़ोर से उतनी तकलीफ़ पहुंचाती हूँ कि जितनी दिशांत को तकलीफ़ पहुंची थी, उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देती हूँ। आप बोले कि और- रोज सुबह आप उठते तो पहला क्या हाँ, मांगते मैं भगवान जब से? भी उसके बाद ये जितनी बार भी हुआ है उसके बाद आज तक, मैं जब भी उठी हूँ गॉड से मैं और कोई प्रे नहीं करके ये मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे इतना पेशेंस दीजिए गॉड कि मैं दिशांत को हैंडल कर पाऊँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दिन भर के लिए। ये आपका सबसे बड़ा रिक्वेस्ट या है, हाँ, है कि नहीं? एकदम बड़ा रिक्वेस्ट। और जिससे मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम शायद हम में है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे, कभी कभी ऐसे लगता है। आपका एक साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, आपने बीए किया है, एमआई करना चाहती है, ये सब के साथ आपको मालूम पड़ा कि इस बच्चे को शायद काउंसलर को दिखाना ज़रूरी है, हाँ। और उस तरह से हम लोग का वो सिलसिला ट्रीटमेंट और काउंसलिंग का शुरू हो गया। या, आपने फ़र्क देखा है इस बीच में, जैसा बच्चे पे? बहुत। जैसे पहले दिशांत कुछ भी मानता नहीं था, और सबसे बड़ी बात तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, और नींद के लिए भी हमें उसे प्रिपेयर करना पड़ता था, सुलाने के लिए लोरियाँ चलाना, ये वो सब कुछ। लेकिन जब से दवाई, जब से मेडिसिन शुरू हुई, काउंसलिंग शुरू हुई, और मेरी फर्स्ट थिंग कि उसने अपनी जो बातें हैं जो अंदर वो ले रहा था वो बाहर निकाल के या तो डॉक्टर को या फिर हमें डॉक्टर से कहने के लिए बोलता था। ADHD के बारे में आपका समझ जब बढ़ गया तो शायद आपका भी रवैया उनके साथ बदल गया, काफ़ी चेंज। हम लोग बहुत स्मूथली चलने लगे उनके साथ, हाँ, उसके हाँ। साथ, और जितना हो सकता था उसकी बातों के पीछे क्या रीज़न है उसे समझ रहे। दिशांत और उनके मम्मी डैडी काउंसलिंग, दवाई गोली लेके ADHD का एक सोल्यूशन उनको मिल गया। नाउ यू नो व्हाट इज ADHD। और क्या आप दूसरे मम्मी डैडीज़ को भी ये मैसेज आप देंगे हमेशा, अगर उनका हमेशा। बच्चा शरारती है वगैरह, तो ये ध्यान में रखे कि शायद ये ADHD है? जी हाँ, यस? ये सब यस सर।